Question we approach and answer considering whether the trial court and the appellate court attended to and dealt with the requirements of due process and fair trial. The reference filed by the President of Pakistan has provided us an opportunity to reflect upon the proceedings of the trial, conviction and death sentence of Mr. Bhutto under the regime of the military dictator General Ziaul Haq. The reference was filed during the government of the political party founded by Mr. Bhutto, but the successive governments of other major political parties carried forward this inquiry and did not opt to withdraw the reference, which included when we were hearing the matter, the caretaker government. This collective interest reflects the widespread desire of the people of Pakistan to seek the opinion of this court on whether Mr. Bhutto was afforded a fair trial and due process for his trial for the murder of Mr. Muhammad Ahmad Khan Kasuri. With the able assistance of the eminent legal minds of the country, we, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein, render an opinion on the referred questions in the following terms. Now I'll read the questions. There were a number of 5 questions. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfiqar Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Articles 1 and 2A, Article 8, 9, 10A, due process, and Article 14 and 25 of the Constitution. If it does not, its effect and consequences. I should clarify these questions were already framed when we heard the matter. And our opinion is as under. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. At the relevant time, Article 10A wasn't part of the Constitution, but the principles enunciated therein have always been part of our jurisprudence. The second part of the opinion of this question is, the question and the Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. Question number 2 was whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfiqar Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all courts, being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if not its effect and consequences. And our opinion is, reference questions do not specify the principle of law enunciated by this court in the Zulfiqar Bhutto case, regarding which our opinion is sought. Therefore, it cannot be answered whether any principle of law enunciated in Zulfiqar Bhutto case has already been descended to or overruled. Questions number 3 and 5 we have taken together, and these are respectively, whether in the peculiar circumstances of this case, awarding and maintaining of the death sentence was justified, or it could amount to deliberate murder, keeping in view the glaring bias against Shaheed Zulfiqar Bhutto. And question 5 was whether on the basis of conclusions arrived at and inferences drawn from the evidence material in the case, an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfiqar Bhutto could have been recorded. And our opinion is, in its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. So we did not find that the fair trial and due process requirements were met. So that's what we have really focused on. Question number 4 referred to Islamic injunctions, and our opinion, we kept asking repeatedly that we needed assistance but was not rendered. So our opinion is we were not rendered any assistance on this question. Therefore, it would be inappropriate to render an opinion on the Islamic aspects. So basically our opinion is that the late Mr. Zulfiqar Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process.
तारीख है। Try to have it rendered into Urdu as well and put up this on the website. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भुट्टो रेफरेंस पर राय सुनाने का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस और नौरुकनी लाज बेंच और राय सुना रहा है सदारती रेफरेंस जो कि 2011 में दायर किया गया था। इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुतफ़िक़ा है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक़ पर अमल नहीं किया गया। रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की राय मुतफ़िक़ा होगी। 2011 में सदारती रेफरेंस ये भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें 5 सवालात पूछे गए थे। सुप्रीम कोर्ट अब इस सदारती रेफरेंस के ऊपर अपनी राय सुना रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया हम जजिस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए हैं। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक़ पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक़ पर अमल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया अहम सदारती रेफरेंस जो कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था ताहम अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस रेफरेंस के ऊपर राय सुनाई गई है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक़ पर अमल नहीं किया गया। सदारती रेफरेंस में जो सवालात पूछे गए उससे मुतल्लिक अपने नाज़रीन को बताएं कि रेफरेंस में ये सवाल उठाए गए कि आया ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुताबिक था और फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा। और इसके साथ साथ एक और सवाल ये भी पूछा गया था कि अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। ये बड़ा अहम और बुनियादी सवाल था और इस सदारती रेफरेंस में जो पूछा गया इसके साथ साथ जो दीगर सवालात थे उनमें यह भी था कि क्या सज़ाए मौत सुनाना मुनसिफाना फ़ैसला था या नहीं। फ़ैसला जानिब दराना नहीं था। क्या सज़ाए मौत कुरानी अहकामात के मुताबिक दुरुस्त है। क्या फ़राहम करदा सबूत और शहादतें सज़ा सुनाने के लिए काफ़ी थीं। ये वो सवालात थे जो सदारती रेफरेंस 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए थे। ताहम इसके ऊपर समातें हुई। ये तूल अरसा जो है इसके ऊपर कोई समात नहीं हो सकी।